मैं आज यूजीसी एचआरडीसी के प्रोफेसर जगदीश जोशी साहब, कोर्स कोऑर्डिनेटर जिज्ञासा वाघेला मैडम जी, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर परीक्षित सिंह जी मंडोरा साहब, हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर श्याम नारायण सिंह सर जी और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को आज मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सर का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। नमस्कार सर जी। It's my privilege and honor that an opportunity is given to me to introduce today's resource person, Dr. Shyam Narayan Singh Sarji, Associate Professor, HOD, Physical Education, Satnam Dharam Post Graduation College, मुजफ्फरनगर, यूपी। सर, आपका स्वागत है। Time won't be enough. It mentioned in all the qualifications of a resource person. But yes, his achievements are noteworthy, which I would like to highlight. Mr. Shyam Narayan Singh completed his doctorate degree in physical education from LNIP Gwalior. Sir, आपने नेट और JRF भी कंप्लीट किया है. Sir has been invited as a resource person and chairperson and keynote speaker more than 59 conferences, seminar, workshop, FDBs, etc. He has published 13 books and 33 research papers and has presented 61 papers in national and international conferences, seminars. सर का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो सर ने अचीवमेंट प्राप्त की है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि प्री पेंडेमिक समय से पहले, पेंडेमिक टाइम में और पेंडेमिक के बाद भी सर ने ई लर्निंग मॉड्यूल 157 से ज़्यादा वीडियो सर ने क्रिएट किए हैं और 13 से ज़्यादा पीपीटी भी सर ने क्रिएट की है। He is fulfilling his responsibilities as a member of Board of Sports in physical education in a North India side like Agra, Meerut, Ayodhya and Jalandhar. Sir has a president of UP chapter of PEFI. इसके अलावा सर आप मुजफ्फरनगर के चेस एवं खो खो के मंत्री पद पर भी आप आरूढ़ हैं। बस ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारे कोऑर्डिनेटर साहब मैडम से विनती करता हूं कि आगे का सेशन श्रीमान डॉक्टर श्याम नारायण सिंह सर जी शुरू करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, वेलकम यू, थैंक यू सर। I would also like to welcome you, sir, Dr. Shyam Narayan Singh, on behalf of UGC HRDC Gujarat University and all the participants. You are very warm welcome here, sir, in the very first online refresher course of physical education, especially organized for physical education. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation and joining with us, sir. Over to you, sir, Dr. Shyam Narayan Singh, sir. सर, आपका ऑडियो ऑफ है सर। Am I audible? Singh, sir. Yes. श्याम सर, There is some issue. श्याम नारायण सिंह सर।
Telugu TV. फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते हुए अभी हमारे सर थोड़े समय में ही जुड़ जाएंगे. हाँ. He will join us very soon. Till then. और एक और बात ये बतानी थी कि जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं है, प्लीज अपना कैमरा जो है वो ऑफ रखिएगा. यदि कुछ इश्यूज हुए थे, आप लोग कहीं पे भी मोबाइल लेकर बैठ जाते हो और फिर वो यहाँ पर शो होता है. और ये पूरा जो हमारा लेक्चर है वो रेकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, तो आप लोग प्रेजेंटेबल ना हो, कैमरा ऑफ रखिएगा. Okay, ma'am. Okay. के लिए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए वॉलंटियर्स के नाम. और हमने डे बाय डे हर रोज जिनके भी नाम पहले आए हुए हैं हमने उनसे कांटेक्ट किया. और जैसे आज नवनीत सर फर्स्ट सेशन का इंट्रोडक्शन एंड वोट ऑफ थैंक्स कर रहे हैं, सेकंड सेशन का मनोज सर करेंगे. वैसे ही डे बाय डे हम इवनिंग में आपसे शेयर करेंगे जिनका भी नाम होगा. ठीक, 30 के आसपास 166 नंबर से अगर कोई कॉल आता है तो आप उठा लीजिएगा. Yes, sir. सबमिशन के Welcome. एसेंसिंग. सर जुड़ गए हैं मैडम जी. May I audible? Yes, sir. Yes. Also, Actually,
Thank you, ma'am. Thank you. Sorry for this interruption. Actually, there is some issue, network issue is there. So even I am having a camera, so it's also not connected with this. So it's okay. So thanks to the coordinator of this refresher course from the Gujarat University, UGC HRDC, the coordinator Parikshit Singh Mandora, and the co-coordinator Dr. Jignesh J. Waghela. So I feel privileged to be here in the front of all the viewers, means the participant of this refresher course. My topic is quietly related with this. Our sports means today the so many sports person they are facing this sports injuries. You can take the example of our Hima Das, even you can take example of Duti Chand. So it's a burning issue. That's why I have chosen this topic. I think it's good for all the viewers. So I'll share the things. Again, I want to ask, I am audible or not? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Okay. So without late, I'll share my PPTs. So because I pray to God for the betterment of our country, I pray to God for the good health of all viewers, because we are facing this pandemic from the last means around 2 years. So it's visible. Yes, sir. My first, Yes, sir. Yes, sir. No, sir. So my first slide is historical aspect of sports injury in India. It's visible means Yes, sir. Yes. okay. Visible. So here in my presentation, I'll cop up so many things which is related with this, the historical aspects with respect to our sports and with respect to our sports injuries in India. So, first of all, I wish you a happy World Physiotherapy Day to all the participants of refresher course. Because in 1996, on the 8th September, is designated as a World Physiotherapy Day. This is the date World Physiotherapy was founded in the 1951. We all know about this. The Per Henrik Ling, the father of physiotherapy. So he's belonged to Sweden. He's also a father of Swedish gymnastics. So this physiotherapy, it's a combination of two words, physio plus therapy. Physio means the physical and therapy means the treatments. The treatment in which we will use all the physical means and methods, that is our physiotherapy. So now, in this presentation, we have made an attempt to describe the historical aspect with respect to sports injuries in India. The early athletic injuries were certainly treated the credit for the first recorded use of exercise, as treatment belongs to the Hindus in the Atharva Veda and to Chinese in the book of Kung Fu around 1000 BC. May I audible?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please Continue, sir. Okay, continue. Yes, sir. In the Western world, the use of in the Western world, the use of therapeutic exercise is first associated with Herodicus. Herodicus means the father of sports medicine. And he was the teacher of Hippocrates, who is also known as father of medicine in the 5th century BC. So come to the points with respect to our India. The Indian Association of Sports Medicine was established in 1971 to promote sports in a better way. There does not seem to have been done much by IASM in developing sports in India. Its role should also be to make the sports person aware of what they should take, what they should not be take, and how to prevent from sports injuries. It is the only in the recent year that India has realized the importance of sports medicine and come up with the plans of incorporating sports medicine in sports for the benefit of its persons. Now we are living in a time when interest in sports and fitness has never been higher. Because today, from the last 2 years, we are facing this pandemic. And जैसा आपने सुना होगा कि एक राक्षस रूपी ये जो वायरस है कोरोना, उसने हिला के रख दिया है. So correspondingly, our knowledge about injury and illness as a result of physical activity has also increased, because not in India, from a whole world, in every educational institute, they have organized webinars, how we have to become fit, how we have to become healthy. So many things are over there. So there is some increment of this physical activity in the present scenario. So all sports come with the risk of injury. And in general, the more contact involved in the sports, the higher of the risk of a more significant or traumatic injury. The most frequent types of sports injuries are sprain, means it's a ligament injury. In the next few slides, I'll clearly clarify all the things which is related with this common injuries. Now, strain, which is related with muscles or our tendon. The stress fracture means it's a bone injury, means there is a hairline fracture in the metatarsals. In sports medicine, a catastrophic injury. Catastrophe means a vinashkari chot, defined to severe trauma to the human head, spine or brain. मतलब अगर खेलों के अंदर हमारे हेड इंजरी हो जाए, स्पाइन इंजरी हो जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए, ये एक बड़ा भयानक चोट है. You can see the concussion in sports become a major issue. And it's very common in our football. So in the 2000s, as evidence connected repeated concussion and subconcussive hits with chronic traumatic encephalopathy and increased suicide risk, overuse and repetitive stress injury. Problems associated with sports include jumper's knee, tennis elbow, tendinosis. There are so many injuries which is related with our sports. So, the being afraid of the skill that cause your injury. अगर आपको लगता है कि किसी स्किल को करने में कुछ चोट लगने की संभावना है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. Now, what is sports injury? Sports injuries are injuries that occurs when engaging in sports or exercise.
Sports injuries can occur due to overtraining, lack of conditioning, improper form of techniques, lack of warm-up, lack of cool down, not proper diet. So there are so many things which is related with this sports injury. If we are lacking in these things, definitely the sports injury will occur. The causes of sports injuries. Sports injuries can be caused by an accident, such as fall or heavy blow, not warming up properly before exercising or before playing a game, unconditioned body, because conditioning is must. If your body is not in a proper condition, then definitely it creates a problem and definitely you'll get an injury. Using inappropriate equipment or poor techniques. If you are having not proper equipment, then it is one of the cause to get injury. And if poor techniques, if you play any games and if you perform any skill, so your technique is totally based on scientific way to reduce your injury. Not follow the rules and regulations. That's why the rules and regulations, they have prepared and published by the Council of different federation. Pushing yourself too hard or lacking in careful attitude. This is one of the main reasons for the young athletes, young players. So they are having a lacking in careful attitude. Almost any part of the body can be injured, including the muscles, bones, joints, and connective tissues. Connective tissue means tendon or ligaments. And commonly, the injury occurred in our ankle, knee. These are two places where the injuries are commonly occurred. If you can take an example of football, the ankle injury is one of the common injury. Now, next is knee injury. So, the lower portion of the body is much more indulged in the games and sports. Now, classification of sports injuries. Actually, there are so many experts with respect to our sports medicine. So they have classified the sports injuries in a different way. Someone is classified in a macro trauma or micro trauma injuries. Macro trauma means the acute injuries, sudden injuries. And micro trauma injuries, it is related with the overuse injuries. Now, exogenous and endogenous. Exogenous injuries means the injuries which occurred from the outside of the things like equipments. Even you can blow on this hard surface, hit by the ball. That is our exogenous. And endogenous means the internal injuries like muscle cramp, tendonitis, bursitis. So these are endogenous injuries. And third one is they have classified in soft tissue and hard tissue injuries. Soft tissue means the muscles, ligament, cartilages. So these are the soft tissue injuries. And as far as this hard tissue injury is concerned, the bone and dislocations are there. Acute, post-acute, chronic injuries. Acute means
sudden injury. If you see this injury as far as duration is occur, so the new injury, or we can say ऐसी चोट जो लगभग 12 घंटे की जो चोट होती है उसको हम एक्यूट इंजरी कहते हैं, मीन्स मैक्रो ट्रॉमेटिक इंजरी. पोस्ट एक्यूट मीन्स आफ्टर 12 hours to 48 hours, post acute injury. And chronic injury means injuries which is for the more than of 48 hours, जिसको हम पुरानी चोटें कहते हैं, that is chronic injuries. Now overuse injuries, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का बार बार प्रयोग होने के कारण जो इंजरीज हो रही है वो दैट इज आवर ओवरयूज इंजरीज. And see this tennis elbow, golfer elbow, tendonitis, anterior leg pain, that is shin splint. So these are some overused injuries. Now specific injuries, these injuries are related with some particular sports, like tennis elbow means it is related with the racket sports as well as the bat related sports, and the golfer elbow, athlete foot. So these are some specific injuries. Now as per body part, our expert has classified these sports injuries as per our body part: foot injury, ankle injury, shin injury, knee injury, back injury, thigh injury, head injury, neck injury, shoulder injury, hip injury, elbow injury, wrist injury. So it's classified as per our body part. So these are the way where our sports medicine experts, they have classified the sports injuries in a different way. So some of the common sports injuries are there. The most common sports injury is sprain, जिसको कि हिंदी में मोच कहते हैं. होता क्या है कि अगर हमारा लिगामेंट, क्योंकि लिगामेंट कहाँ होगा, अगर आप देखेंगे कि लिगामेंट ये हमारे जॉइंट्स के पास होगा, जो दो हड्डियों को बांध के रख रहा है जोड़ के पास. एक्चुअली में होता क्या है कि जो दो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियों के सिरों पर, मतलब एंड पार्ट ऑफ द बोन्स इज कवर्ड बाय कार्टिलेजेस, एंड दीज बोन्स आर बाउंडेड बाय लिगामेंट. लिगामेंट के द्वारा उसको बांधा गया हुआ है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि बंध, मतलब अस्थियों का बांधने का बंध. अगर वो अपनी एक सीमा से अधिक खींच जाए, मीन्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कि इट्स अ स्प्रेन, जिसको हिंदी में मोच बोलते हैं हम. और होता क्या है, अगर वो ओवर स्ट्रेच कर गई, अपनी एक सीमा से अधिक खिंच गई, मीन्स इट्स स्ट्रेच बियॉन्ड द लिमिट, सो इट्स ए mild sprain. Actually, sprain is divided in three ways: mild, moderate, and severe. Mild means overstretching, or you can say one or two tissue of a particular ligament tears, breaks. और अगर around 50% ligaments are break, then it's called a moderate sprain is there. If 100% ligament of a particular joints are tear, then you can say that it's a severe sprain. So most common sprain in sports is an ankle sprain. Ankle sprain is most common. A sprain related with the joints, and it's an injury of ligament. Now strain. A strain is related with the muscle, or you can say a tendon.
the extreme end of the muscles is also known as tendon. So if there is overstretching or tearing, if overstretch of the particular muscles, you can say it's a strain. If there is tearing, means उस मांसपेशी के तंतु अगर टूट भी रहे हैं तो वहां भी हम स्ट्रेन. So this strain is classified in three ways: mild strain, moderate strain and severe strain. Mild means कि overstretch हो गया है और एक या दो तंतु उसके टूट गए. Moderate means around 50%, 40 to 50% उस particular muscles के जो fibers हैं वो tear हो गए, टूट गए. और third one is severe, जब complete tearing of that particular muscle is known as our severe strain. So most common strain in sports is hamstring strain. अभी आपने देखा होगा हिमा दास एक अच्छी धाविका, it is one of the good runner for our India. वो ओलंपिक का पार्टिसिपेट नहीं कर पाई टोक्यो के अंदर ड्यू टू दिस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन. क्योंकि आप देखेंगे कि जो 60th नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप NSNIS पटियाला में हो रही थी, वहां पर इसके संग ये इंजरी हो गई. ये बड़ा दुर्भाग्य रहा हिमा दास का और भारत का कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. अब देखेंगे ग्रोइन पुल. अगर प्रॉपर वार्म अप नहीं है तो ग्रोइन कहां, ये मसल, इट्स अ मसल, ग्रोइन इज अ मसल. अब वो देखेंगे मसल कहां होती है, जहां हमारा एब्डमन और हमारा थाई का मिलन होता है. मींस हमारी पेट और जांघ की मांसपेशी जहां मिल रही है वहां ये ग्रोइन मसल होगा. आपने देखो अक्सर कोई प्रॉपर वार्म अप नहीं किया या उसकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर इम्बैलेंस आ गया तो बोलते ना क्रैम्प आ गया. सो यहां पर पुल का खिंचाव मींस द पर्टिकुलर मसल इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड दैट लिमिट. ग्रोइन पुल, जिसको कि हम स्ट्रेन भी कह सकते हैं. So groin pull are common in people who play sports that require a lot of running and jumping. In a particular, suddenly jumping or changing direction is a likely cause. So groin pull often appear in people who play soccer and football. आप देखेंगे फुटबॉल, सॉकर, इवन आप देख रहे हैं बास्केटबॉल प्लेयर को ग्रोइन हो गया. इवन आप देख सकते हैं ये बेस्ट फिजिक का खिलाड़ी है, उसको भी ये दिक्कत आ गई है. तो ग्रोइन पुल कहां है कि जहां हमारा थाई और हमारा एब्डोमेन जो मसल मिला रही है, दैट इज ग्रोइन मसल्स, और उसके अंदर स्ट्रेन आ गया, दैट इज आवर ग्रोइन पुल. इट्स ऑल्सो ए कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी. नाउ नी इंजरी. आपने नी इंजरी देखा होगा कि नी इंजरी के अंदर भी ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, इट्स ऑल्सो लिगामेंट. अगर आप देखेंगे कि जो नी होता है हमारा, उस नी के एंटीरियर साइड के अंदर हमारा लिगामेंट होता है और वो आप देखेंगे कि लिगामेंट या तो अधिक खिंच गया हो या टर्न लेने के बाद देख सकते हैं ऊपर जो फुटबॉल प्लेयर है उसका देख रहे कि नी जो एकदम टर्न ले गया, रोटेट हो गया एकदम. यहां रोटेट होने के कारण क्या हो गया, ये जो उसका ACL था, एंटीरियर क्रूशिएट जो लिगामेंट था, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया यहां पर. सो रेसलिंग में, जूडो में, कबड्डी में, फुटबॉल में, जिस गेम के अंदर पैर हमारा मुड़ जाए कंप्लीट, दैट इज आवर ACL इंजरी. ऐसे PCL भी होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. जस्ट मतलब पोस्टीरियर साइड, अपने नी के पोस्टीरियर साइड में लिगामेंट होता है. और ऐसे ही मीडियल लिगामेंट भी होता है इसके अंदर. आप देखेंगे मेनिस्कस भी होता है यहां पर.
और मेनिस्कस भी हमारी नी के पास, ये जो नीचे देख रहे हैं मेनिस्कस, इट्स अ कार्टिलेजेस। मैं ये एरो को दिखा रहा हूं मैं, आप देखेंगे ये एक मेनिस्कस होता है, यहां इंजरी हो गया, मेनिस्कस इंजरी हो गया ये, बट एसीएल इट्स ए कॉमन इंजरी। नाउ शिन स्प्लिंट, जिसको हम एंटीरियर लैग पेन कहते हैं, वी कैन से दिस शिन स्प्लिंट एज ए एंटीरियर लैग पेन। और एंटीरियर टिबियोलिस मसल्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन मींस, अगर हिंदी में बोले इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया दर्द, जलन, सूजन, लालपन। मींस इन्फ्लेमेशन मींस पेन, इचिंग और बर्निंग, यू कैन से टेंडरनेस, swollen एंड रेडनेस। अगर पर्टिकुलर जगह पे होता है, ये क्या, इट्स ओवर यूज इंजरी। दैट sin splint, वी कैन से द medial tibial stress syndrome, it's a inflammation of the muscle, tendon and bone tissue around your tibia. Or tibia is our shin bone, that's why you can say this sin splint. So sin splint is of two types, anterior lateral, lateral means बाहर की तरफ, एंड मीडियल मीन्स अंदर की तरफ। आप देखेंगे एंटीरियर लेटरल सिन स्प्लिंट, स्प्लिंट मीन्स इन्फ्लेमेशन इन दैट टिबियोलिस मसल्स। अब पोस्टीरियर टिबियोलिस मीन्स पीछे, और हमारा मीडियल साइड के अंदर अगर स्प्लिंट है, दैट इज आवर पोस्टीरियो मीडियल सिन स्प्लिंट। नाउ स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज एन ओवर यूज इंजरी। डेफिनेटली जब हम अपने प्लांटर फेज का, मीन्स जो हमारे सोल होते हैं, या हम मैं कहूँगा कि हम अपने फुट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने इवन पढ़ा भी होगा कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि जितने भी हमारे सिपाही थे उन सबको स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसको कि मार्च फ्रैक्चर का नाम दिया गया था। और ये जो मेटाटार्सल बोन होती है, मेटाटार्सल बोन के अंदर हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। So stress fracture can occur when increasing activity, especially too quickly. The majority of stress fractures occur in the lower legs and feet. Main जो है common जो होता है, common for this stress fracture is our this metatarsal. Now plantar fasciitis. फैसाइटिस, प्लांटर मींस, प्लांटर अगर देखा जाए तो प्लांटर किसे बोलेंगे, जिसपे कोई चीज प्लांट की जाती है, खड़ा किया जाता हो। इवन यू कैन सी इन द पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट के अंदर देखा होगा कि आपने जो बॉक्स होता है नीचे, वॉल्ट बॉक्स, उसको प्लांट बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो पोल होता है उसको प्लांट करते हैं उसके अंदर। सेम प्लांट हमारा क्या होगा, नीचे का सोल हो गया। अब फैसाइटिस मींस फेसिया, जो फेसिया है इसका कवरिंग, वहां पर आइटिस हो गया। आइटिस मींस जहां आइटिस आ गया, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब दर्द, जलन, सूजन, लालपन, पेन, बर्न, swelling and redness. So this, the plantar fascia is a ligament, आप देखेंगे, that connects the heels to the front of the foot, supporting the arc. Plantar fasciitis is inflammation of this ligament. It causes heel pain, often felt the first thing in the morning after getting out of bed or after being active. Really, it's a overuse injury. आप देखेंगे जब भी एथलेटिक्स का कैंप लगा हुआ होता है खिलाड़ियों का, तो जब वो सो के अपने बिस्तर से जैसे पैर जमीन पर रखते हैं तो पेन, बहुत सीवियर पेन होता है इस तरह। दैट इज प्लांटर fasciitis. Now tennis elbow, it's also a common injury. Racket sports,
टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस, इवन बैट वाले जितने स्पोर्ट्स हैं लाइक क्रिकेट, हॉकी, यहां टेनिस एल्बो होने की उम्मीद है। और आप देखेंगे जो लगातार अपने हाथों को यूज करते हैं लाइक प्लम्बर्स, पेंटर्स, इनको भी ये होने की संभावनाएं बनी रहती है। इट्स ओवर यूज इंजरी। और इवन इसको हम कहते हैं एपिकॉन्डिलाइटिस। और होता क्या है कि अगर आप हाथ को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं तो जो हमारा एपिकॉन्डाइल होता है, लेटरल बाहर वाला भाग, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो हमारा क्या हो गया, ये एपिकॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो। वही अगर मीडियल साइड में होता है, मीडियल साइड में, तो उसको हम गोल्फर एल्बो बोलते हैं, गोल्फर एल्बो। और टेनिस एल्बो, it's also again divided in two way, that is forehand tennis elbow or backhand tennis elbow. Or this tennis elbow, forehand or backhand, it depend on the particular muscles which is involved in particular skill. So tennis elbow involves inflammation of the tendons on the outside of the elbow caused by small tears. टीएस होने की भी संभावना है यहाँ पर। और बड़ा ही पेनफुल इंजरी होती है बिकॉज कि देयर आर सो मेनी नर्व्स दैट इट पासेस फ्रॉम दिस एपिकॉन्डाइल एरिया, इसलिए बहुत ज्यादा इंजरी होता है, मतलब दर्द होता है, बहुत पेनफुल होता है। इवन अगर आप स्कूटर भी चला रहे तो हाथ से स्कूटर छूट जाएगा, ऐसा एक इंजरी होता है टेनिस एल्बो। नाउ एक्लिस टेंडनाइटिस। एक्लिस टेंडनाइटिस, पहली बात, एक्लिस टेंडन, इट इज वन ऑफ द पावरफुल टेंडन ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग। That tendon is connect our this gastrocnemius muscles to our heel. ये टेंडन हमारी काफ मसल को हील से जोड़ती है। और अगेन एक्लिस टेंडनाइटिस, आइटिस है यहां पर, अगेन इन्फ्लेमेशन, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इस एक्लिस टेंडन के अंदर दर्द, जलन, सूजन, लालपन आ जाए तो समझ लो दैट इज एक्लिस टेंडनाइटिस। So this area may become painful, swollen and stiff. The pain worsen after physical activity. The tendon may become thickened and in some cases bone spurs may develop in the area. How we have to prevent these sports injuries? Actually, there are so many injuries, but some of the common injuries I have mentioned in my earlier slides. So we can reduce our risk of getting injured by warming up properly before exercise or before game. Read more about how to warm up before exercise and how to stretch after exercise, means during cool down. Not pushing your body beyond your current fitness level. This is one of the main cause of Indian players, that they push their body beyond their fitness level. Using the right equipment, for example, wearing running shoes for running, shin guard of football, and a gum shield for rugby. This is one of the main reason. जो अनाड़ी खिलाड़ी होते हैं, those who are एकदम बोलते हैं नौसिखिया, वो खिलाड़ी, आपको भी बताना चाह रहा हूं मैं कि when here is a mention shoes, हमारा जितना भी स्पोर्ट्स शूज होता है, जॉगिंग शू, इवन स्पाइक्स, जो भी होता है, हर साइज का, जितनी ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो 3 प्रकार की जूते बनाती हैं, 3 प्रकार के शूज बनाती हैं। मीन्स फॉर एवरी साइज the branded companies manufactures 3 types of shoes on the basis of our foot biomechanics to prevent the sports injuries. वो क्या, आपने देखा होगा, फ्लैट फुटेड मीन्स ओवर प्रोनेटर, दूसरा क्लो फुटेड मीन्स अंडर प्रोनेटर, एंड थर्ड वन इज नॉर्मल न्यूट्रल प्रोनेटर, जिसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं हम। फ्लैट फुट है पैर
तो जितनी ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो फ्लैट फुट से संबंधित शूज बनाती हैं. वी कैन इजिली सी एंड रिएक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट शूज कि भाई आपको फ्लैट फुट है या क्लॉ फुट है. अगर किसी का पंजे शूज जो है, जॉगिंग शूज जो है, अगर लेटरल साइड से घिस रहा है, बाहर की तरफ से घिस रहा है, समझ लीजिए उसको फ्लैट फुट है. और जिसका मीडियल साइड से घिस रहा है जूता, समझ लीजिए उसको क्या है, क्लॉ फुट है. और जिसको बराबर जूता घुस रहा है, मतलब सोल जो शूज का बराबर घिस रहा है, इसका मतलब इट्स इज ए परफेक्ट, उसका फुट है. तो ब्रांडेड कंपनी जितनी है, प्यूमा, रिबॉक, अभी जापानीज कंपनी एसिक्स कंपनी के पास आप इफ यू वांट टू परचेज योर शूज, वो सेम डे आपको जूता नहीं देगी कंपनी. फर्स्ट दैट कंपनी विल टेक योर टेस्ट, फुट टेस्ट, a foot test on the basis of some hello. So ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज क्लियर है? ओके, इट्स ओके. आ रहा है सर. सो सब मेरा स्लाइड्स क्लियर दिख रहा है, आवाज ठीक आ रहा है मेरा? यस सर. आ रहा है सर, आ रहा है. ओके सर. ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़ते हैं. ओके, राइट. ओके, थैंक यू. तो मैंने कैसा बताया कि मैं यहां बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि जब प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज की बात आई तो शूज हमको कभी भी, हमको बाकियों को भी इंस्ट्रक्ट करना है, हमको बाकियों को भी एक नॉलेज प्रोवाइड करना है कि वेन एवर यू विल वांट टू परचेज अ शूज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से टू योर डीलर कि भाई प्लीज टेक माई फुट टेस्ट. सो वो फुट टेस्ट कैसे लेगा? सो दे विल डिप योर फुट इनसाइड द वाटर और उसकी छाप लगा के देखेगा वो. सो जो प्रिंट आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंट ही विल प्रोवाइड योर शूज. क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों ने कि भाई मेरा नंबर 7 नंबर का शूज है, 7 नंबर का शूज परचेज किया और पहनने के बाद जूता चल के देखा, उसने बोला भाई ठीक है, और पता पड़ा कि जब उसने अपना जॉगिंग स्टार्ट किया तो फर्स्ट 7 डेज 10 डेज के लिए बहुत ही कैसे रहे, डिफिकल्ट, पेनफुल रहे. पता पड़ा तो शिन पेन चालू हो गया, बैक पेन चालू हो गया, एक्चुअली टेंडनाइटिस चालू हो गया. व्हाई? बिकॉज बेस्ट सूटेड शूज नहीं पहना है इसने. दैट्स वाई हमको क्या करना है कि जब वेन एवर विल गो टू परचेज शूज, हम टेस्ट देंगे पंजे का, उसका ऑन द बेसिस ऑफ आवर फुट, बायोमैकेनिक्स विल परचेज दैट शूज. तो जितनी ब्रांडेड कंपनी, दे हैव इंस्ट्रक्टेड देयर डीलर्स कि भाई वेन एवर एनी कस्टमर विल कम टू परचेज शूज, यू विल टेक द विट फुट टेस्ट. सेम हम सॉक्स की बात करता हूं. सॉक्स, एक तरफ तो हमारा एक एथलीट पूरा शरीर को ढक के चल रहा है, मींस टाइटी पहन रहा है, टाइटी. और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं, इवन हम अपने स्पोर्ट्स पर्संस को भी देख रहे हैं कि वो सॉक्स कैसी पहन रहे हैं, जो जुरा जूते के अंदर घुस गई है, शॉर्ट सॉक्स. भाई हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सॉक्स. सॉक्स अंडर नी तक का सॉक्स होना चाहिए, नायलॉन ग्रिप होना चाहिए, जिसका कंप्रेशन ऊपर की तरफ धीरे धीरे रिड्यूस होना चाहिए. व्हाई? फॉर द प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर मसल्स ऑफ आवर लेग. आप अपने पर रिसर्च कर सकते हैं. आप एक शॉर्ट सॉक्स पहन के एक दिन 5 किलोमीटर वॉक करके आइए और एक दिन आप अंडर नी वाला सॉक्स पहन के आइए आप, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ऐसे सॉक्स में मसल स्पाज्म नहीं होती, और आपने शॉर्ट सॉक्स पहना है तो मसल स्पाज्म होगी, हमारी काफ मसल. स्पाज्म मींस मसल इकट्ठा हो रही, कठोर हो जा रही है. ठीक है, मसल कैसी हो गई? कठोर हो गई है मसल. तो वो स्पाज्म, वहां पर अगर हम लॉन्ग सॉक्स पहनते हैं तो वो हमारा मसल स्पाज्म नहीं होता है. ठीक है, और मसल कठोर नहीं होती है. आपने गांव की भाषा में देखा होगा, खड़ी भाषा में, अगर दूध कोई दूता है तो हाथ देखा होगा, जो हमारी ये जो मसल्स होती है प्रोनेटर टेरिस, ये मसल कठोर हो जाती है, ठोस हो जाती है.
वो क्यों? ड्यू टू मसल स्पाज्म. तो there are so many equipments, our wearings we can use, or we can instruct our players to please take appropriate equipment for the your play. Receiving coaching to learn correct techniques. कई खिलाड़ी देखते हैं टेक्निक्स ही अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, डेफिनेटली उसको इंजरी होगा. When starting a new sports or activity, get advice and training from qualified fitness trainer or sports coach. आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, दे डजंट नो द सिंगल स्किल ऑफ देयर गेम, और वो ट्रेन कर रहा है, खिलाड़ी को बना रहा है. और हमारे रूट लेवल के पर, क्योंकि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन इंडिया एट द प्राइमरी स्कूल्स और इवन इन सेकेंडरी स्कूल्स आर द नंबर ऑफ टीचर्स, दोज आर हैविंग अ बीपीए डिग्री बट दे डोंट नो द सिंगल स्किल ऑफ देयर गेम. और वो एक खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं, उस खिलाड़ी को कैसी भी स्किल की टेक्निक सिखाई जा रही है, वो क्या होगा? पहली बात तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, दूसरा इंजरी के चांसेस बहुत अधिक होंगे. सो प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज इज मस्ट. प्रॉपर फिटनेस होनी चाहिए, इंजरी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वेदर कंडीशन भी है ऐसा, अगर पता पड़ा मौसम चेंज हो गया तो अकॉर्डिंग टू देयर वेदर विल टेक आवर डाइट. क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, अगर आप पता पड़ा यहाँ से सिक्किम चले गए तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, वहाँ इंजरीज होने के चांसेस हैं. क्योंकि जितने भी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक्लिमेशन होना बहुत जरूरी है, एडेप्टेशन होना बहुत जरूरी है वहाँ पर, अदरवाइज वो इंजरी प्रोन वाली स्थिति आएगी. सो द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी इन इंडिया प्लेयर्स, स्ट्रेन, ACL, रनर्स नी, टेनिस एल्बो, मसल पुल, शिन स्प्लिंट, मैंने बात किया यहाँ पर. और भी इंजरीज हैं, सो मेनी इंजरीज, क्योंकि वो इंजरीज को मैं यहां अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज माय टॉपिक रिलेटेड विद आवर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स. तो सम ऑफ द कॉमन इंजरीज आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. अब ये हिमा दास को देख सकते हैं आप. हिमा दास अभी 60th जो नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ NSNIS पटियाला में, जस्ट 2 months बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस ओलंपिक, उसका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया. ठीक है ना. तो सम ऑफ द इंजर्ड इंडियन प्लेयर्स कुछ मैंने निकाला, और whenever you'll go and search the injured players with respect to of India country, तो आपको अधिक से अधिक क्रिकेट ही मिलेगा बस. पता नहीं क्रिकेट ने क्या जादू किया हुआ, समझ में नहीं आता. खाली क्रिकेट के खिलाड़ी ही दिखेंगे आपको उसके ऊपर, कुछ भी चीज. मैं यहां पर व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक कि अराउंड 1000 प्लेयर अगर तैयारी कर रहा है टू बिकम अ गुड प्लेयर, टू अचीव समथिंग, अपना कैरियर बनाना चाहता है वो उसके अंदर, तो उस 1000 में पता पड़ता है कि सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी आगे निकलते हैं, बाकी को पता पड़ा कि इंजरी प्रोन हुए और वो बाहर होते चले गए. उनका क्या हुआ कुछ नहीं पता. जितने एलिट स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हीं को आप अखबारों में देखेंगे उसको चोट लग गया. हिमा दास जैसे पता नहीं और कितने खिलाड़ी होंगे, वो आपको पिक्चराइजेशन में नहीं दिखेंगे. इसके ऊपर मैं एक डाटा एनालिसिस भी कर रहा हूं मैं कि ऐसे खिलाड़ी कहां गुम हो गए. अब सबा करीम इंजर्ड हुए, इनका आई इंजरी हुआ बांग्लादेश में कि एशिया कप जो ढाका में हो रहा था 2000 में, और अनिल कुंबले के डिलीवरी जो हुआ उसका आंखों पे लगा. और आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर
एक ये विडंबना है कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन बहुत है बट स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स बहुत कम है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे शायद ही एक स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर मिलेगा आपको। सभी फिजियोथेरेपी मतलब अपना फिजिशियन है सभी। किसी खिलाड़ी को चोट लगा, वो गया फिजिशियन के पास, तो फिजिशियन क्या हुआ, कम से 10 या 15 एक्सरे करवा देगा पहले, बिकॉज ही इज नॉट एक्सपर्टाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पोर्ट्स इंजरीज। और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जो होता है वो क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है उसके अंदर। रमन लांबा शॉट टू डेथ। रमन लांबा को जो हेड इंजरी हुआ, इंटरनल हेमोरेज हुआ, कोमा में चला गया एंड लॉस्ट हिज लाइफ। In 1994, Fulela Gopichand, knee was in a very bad shape. Gopichand suffered insufferable pain and underwent 2 surgeries in 10 months. He never gave up and played with knee braces. मतलब घुटने पे ब्रेसेस बांधनी पड़ी इसको। In 2001, Gopichand went on to become the 3rd Indian to win the All England Badminton Championship. देखो आफ्टर इंजरी, इतनी पीड़ा सहने के बाद 1994 के अंदर इंजरी हुआ, नी इंजरी, और आफ्टर 7 years he won the All England Badminton Championship. मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप नहीं जीतता तो क्या होता, इसकी इंजरी का डिस्कशन नहीं हो रहा होता। जोशना चिनप्पा, द स्क्वैश प्लेयर, आपने सुना होगा, अमेरिकन जो मित्तल है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने खूब अवार्ड दिया। एंड हर एंकल a sprain and a stretch of the court. She suffered anterior cruciate ligament ACL injury हुआ, which threatened to end her career. Doctors were not really optimistic that she will be able to return playing squash again. She underwent surgery and a rehabilitation program. Joshna was determined to make a comeback, which she did. ये खिलाड़ी का दम है, ये उसका एक इंस्टिंक्ट है कि again she come back. She scripted history by bagging the gold medal at the Commonwealth Games 2014, partnering with Deepika Pallikal in Glasgow 2014. In 2004, Sachin Tendulkar suffered tennis elbow injury, which potentially ended his cricketing career. The master blaster could not even pick up his son Arjun plastic bat. मतलब टेनिस एल्बो इंजरी ऐसा होता है आप कुछ उठा ही नहीं पाओगे आप। He was out of action for 3 months and made a comeback in Sri Lanka series in August 2005. The Little Master second half of career saw him record the first ever double century in one day. He was also part of the 2011 World Cup winning team. अब देखो, मैंने बहुत खोजा कि क्रिकेट के अतिरिक्त कोई खिलाड़ी मिले इसके अंदर, बट जोशना चिनप्पा, उसके हिमा दास, दुती चंद। अब यहां हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात है, इतिहास से देखा जाएंगे, इतिहास देखते हैं आप हम लोग सभी प्रोफेसर्स, इवन सम टीचर्स, दोज हु आर पार्टिसिपेंट इन द रिफ्रेशर कोर्स, आप पास्ट देखेंगे, आपके साथ का कोई खिलाड़ी होगा, उसकी स्थिति क्या है आज अगर इंजर्ड है तो। दीज आर सेलिब्रिटीज, आप कहीं भी सर्च करेंगे तुरंत मिलेगा। अगर एक पर्टिकुलर प्राइमरी स्कूल लेवल से अगर कोई खिलाड़ी बनने जा रहा है, खिलाड़ी उसका आगे क्या हुआ अगर सपोज इंजरी हुई तो उसको, आई प्रे टू गॉड फॉर आवर स्पोर्ट्स पर्संस, फॉर आवर इंडिया, दे विल नॉट फेस दिस इंजरी इन फ्यूचर। बट अगर कोई तैयारी हो रहा है, मैंने बोला ना 1000 खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं तो पता पड़ा 1 या 2 खिलाड़ी सही से निकल गए आगे। An overview of sports injuries in India
the changing profile of sports-related injury, as well as limited availability of facilities for rehabilitation in many areas of India is a matter of concern. हर cities में नहीं मिलेगा आपको. I belong to मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर में मुझे नहीं दिख रहा कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर बना है. क्योंकि अगर देखा जाए कि इन वेस्टर्न यूपी मुजफ्फरनगर एक गढ़ है खिलाड़ियों के लिए. एथलीट्स, वॉलीबॉल प्लेयर्स, रेसलिंग प्लेयर्स, कबड्डी प्लेयर्स, बट यहां एक भी रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है. अगर किसी को इंजरी हो तो कहां जाएगा? हाँ, एलीट स्पोर्ट्स पर्सन हैव सम प्रोटेक्शन. अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा नाम हो गया, उसका खूब पुराना खिलाड़ी है, उसको सम प्रोटेक्शन है, बट द एवरेज एथलीट इज ऑफन लेट टू फेंड फॉर हिमसेल्फ. उसको चोट लगी तो वो खुद ही जाने. वो key factor in successful sports injury rehabilitation protocols are the application of modern rehabilitation protocols under appropriate supervision, appropriate and well-timed surgical interventions, and judicious and need-based use of pharmaceutical agents. India is lacking in the number of expertise doctors in the field of sports medicine. It's a fact. बहुत कम मिलेंगे आपको. Modern rehabilitation protocols emphasize teamwork and proper rehabilitation planning, and the rehabilitation team has to be led by a trained sports physiotherapist with an understanding of the protocols and intervention required at various stages. पुनः स्थापन. रिहैबिलिटेशन मीन्स अगर किसी खिलाड़ी को ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग गेम को इंजरी होती है, उसके बाद उस खिलाड़ी को दोबारा मैदान पे लाने के लिए जो बीच में प्रोसेस जो चला, दैट इज आवर रिहैबिलिटेशन. So in the modern era, rehabilitation after sports injury has become a domain for specialists, and its evaluation has necessarily brought together the sports physiotherapist, the sports physician and the orthopedic surgeon. आप देखेंगे अगर कोई भी आपकी लिगामेंट इंजरी है, कार्टिलेजेस इंजरी है, तो देयर सो मेनी. कुछ डॉक्टर्स हैं, नाम सुनने में आता है कि भाई मुंबई के अंदर डॉक्टर आनंद मोहन, कार्टिलेजेस, अगर नी इंजरी में कार्टिलेज है या एंकल का है तो आनंद मोहन जी के पास जाइए. ये स्थिति है भारत के अंदर, एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा है. In modern competitive sports, injured athletes are under pressure to return to the competition as early as possible, which is often a demand for both the sports person and the team management. ये एक विडंबना है भारत के अंदर कि जितने मॉडर्न कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं, कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है, उसके ऊपर इतना प्रेशर दिमाग में आ जाता है कि यार मुझे कैसे भी मैदान पे पहुंचना है एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, मैं मेरी जगह कोई और ले लेगा. ये स्थिति है. आप देख सकते हैं कि जब लास्ट 2016, उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक हुआ, आपने देखा होगा कि बैडमिंटन के अंदर साइना नेहवाल की अपोनेंट जो थी, इसको जरा सा भी दिक्कत हुआ, पैर के अंदर स्प्रेन हुआ, एकदम वो बाहर हो गई ऑटोमेटिकली. That the sports rich countries, China, Germany, Russia, America, athletes also stand a chance of losing their place in the team due to highly competitive scenario and naturally come under higher pressure to return. Thus, compared to traditional rehabilitation after injury, sports injury rehabilitation require more care, a highly structured and sports-specific approach which should prepare both the athlete and the injured tissue for the following physical and psychological demand at the highest level of sports. It's a demand of the athletes, of the players, of the sports persons. Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity.
It's said by Hippocrates, the father of medicines. Now, conclusion. Rehabilitation after sports injury is a crucial aspect to ensure full recovery, minimize time off from sports, and to prevent re-injury. Modern rehabilitation methods have suppressed traditional management protocols and are based on an active rehabilitation framework that demand equal participation from the athlete and the entire rehabilitation team. Attempts are made to ensure the earliest RTP, and even though the sports clinicians are responsible for a safe transition back to competition, it is important to remember that the athlete has the final say. The role of surgical intervention as well as pharmaceutical requirement is need based and beyond the scope of this manuscript. But the major work on a sports person after injury is done by the rehabilitation team. In addition, one must not ignore nutritional supplementation. It is exactly. You have to take balanced as well as good diet to become fit, which minimize the sports injuries. And psychological intervention. बिल्कुल आप देखेंगे खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है और सोच रहा है अपने घर की बात, तो डेफिनेटली उसको इंजरी होगा. उसके दिमाग में बहुत प्रेशर, टेंशन, अपनी जॉब का टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, और वो गेम खेल रहा है, इंजरी होगा उसको. तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी काफी चीजें ऐसी हैं that prone to injury, which have a major role in getting the athletic back to full fitness along with injury-free return to sports at the same level when he was injured. The lack of research and literature regarding structured program addressing injury management and prevention in Indian athletes shows evidence that occur country is lacking in the area in comparison to more developed, or we can say sport-rich countries such as United Kingdom, US, Australia, Germany. Now, thank you. Thank you to listen me. If you are having any query, you can ask. I have a doubt. Thank you very much, sir. Thank you. Hello, sir. Thank you, sir. Hello. Actually, my camera is not working properly. That's why I'll come on the camera of this my laptop. So there's so many things I can also use on my board also. Thank you, sir. Nice presentation. Sir, suggest some first aid techniques to follow immediately after the common injuries in the field, sir. Pardon means, madam, please. Sir, suggest some first aid techniques we have to follow immediately after some common injuries in the field. Please, madam, your voice is not clear. Please, it's better you have to write. It's better you have to write on this chat. Hello, sir. Can I ask one question? Yes, of course. Yes, can you please explain what are the growth plate injuries? How we can minimize and overcome such injuries? Okay. First of all, I'll clear what is growth plates. Actually, the long bones, the end points of that long bones, there is epiphyseal plates. Epiphyseal plates are there, which is also known as this growth plates. So if that growth plates disturb or having some injury, so the growth of that particular portion of the body is disturbed. So how we have to minimize? That is the prevention. Prevention is one of the main aspects with respect to this injury, because if the long bone, the extreme end of that bone is disturbed and having injury near this epiphyseal plates,
So definitely the growth of that particular things is disturbs. So we are not doctors, we are physical educationists, but we know if there is an injury, so definitely will go to your doctors and take concern with this doctors. Okay, what we can do when there is epiphyseal injury is there. Sir, is it a overuse injury? Is it so? Actually, some of the overuse injuries are mentioned there, but overuse injuries, most of the injuries which is related with is overuse also. If I'll use my muscles so many times, so that muscles having some strain also. So that, as per your question, you have asked about this epiphyseal plates, means the growth plates. It's having some chances with respect to this overuse also. Right. Thank you, sir. Thank you so much. It's okay. Sir, if there is a strain, what are the first aid techniques we have to use immediately after the injury? For sprain, Yeah, for strain. definitely we are having thumb rule. For sprain, we'll use this rice. First of all, we'll provide rest. Then we'll put ice for minimize the pain, for minimize the swelling, because that ice constricted the blood vessels which is near that ligament, and then compression is there, then elevation. So immediately after sprain, we'll use this rice. Nowadays, that rice is converted with this police, POLIC, because our NADA team is used this word police, P for protection, O for optimum load, L for means optimum load, I for ice, C for compression, E for elevation. So immediately you have to use this thumb rule, means rise. And after that, if there is much more injury, then you will use this steroidal injection. Then you will use NSID, non-steroidal inflammatory drugs. Then we'll move towards with injuries, that injuries cross this 48 hours, then we'll move towards the different physiotherapeutical means. Excuse me, sir. Sir, I am Dr. Sambhu. Sir, I have one doubt. Hello. Sir, I am Dr. Sundar. I have one doubt. Your For the voice is first not aid, clear. Your voice is not clear. Sir, now it's okay, sir. Hello. हाँ, क्या आया है ये, कहाँ से? ठीक है, डन. Yes, Dr. K. Sundar, what do you want to ask? Sir, what are the first aid given for the strain and joint injuries? First aid for strain and joint injury. So, strain and joint injuries. Sorry, strain and Joint injuries. Joint injuries. joint means, please spell the joint, Joint. Yes, joint injuries. Okay. So there is two things. Number one is strain, second one is joint injury. For strain, strain means it's an injury of muscle or our tendon. Tendon is a part of a muscle. If there is a strain, again you will use this rice. Again, rice is there.
And as far as our joint injury is concerned, so what type of joint injury is this? It's a dislocation, or it's a incomplete dislocation, or is there bursitis? So first of all, you have to mention which type of joint injury is this. Suppose dislocation is this there. So first of all, you'll take not any movement over there. Otherwise, it creates some severe condition. It's complicated case will convert it into complicated case. So at the time, you have to static your that joint. Then if there is some much more pain is over there, बोलते ना देसी इलाज करना, a simple treatment is there. If you can push out the head of that particular bone inside that cavity, so you can, otherwise immediately you'll call or immediately you'll take that patient to the orthopedics, because it's a joint injury. And strain is normal, it's a normal injury. Okay, thank you, sir. Thank you. Excuse me, sir. Sir, this is Prem. My question regarding that in the few videos I seen that few football players was died during the competition. Here my question about that, how the international level, the quality level of players was died during the competition. Okay. By massive heart attack. Good question. Your question is related with the diet. Am I right? Yes, sir. Okay. Actually, as far as our sports medicine experts, even diet experts, even your nutrition expert, even our Indian Council of Medical Research. So, our diet plan is classified as per the nature of sports. We have divided our sports in 4 ways: light sports, then moderate sports, and third one is our heavy sports, fourth is endurance type of sports. Your question is about this football. Football comes under this heavy sports. Whenever we'll prepare the dietary chart, so we will divide that body weight into 70. Suppose I am a 60 kg of body weight, so 60 into 70 means 4,200 kilocalorie. So we'll provide a food, a meal of having 4,200 kilocalorie. And this 4,200 kilocalorie, we will distribute as far as this nutrients are concerned. Nutrients means carbohydrate will give 55 to 60%, means 60%. Now come to this protein and fats. Fats is around 27% and 13% is this protein, because football is a heavy sports and it's having a muscular effort which is equivalent to a walker means a walk person which walk for 6 meal per hours. So that energy required for this football also. So whenever we'll prepare this dietary chart, will calculate by this body weight, and certain things are also there, because whenever we'll study about this principles for preparing this dietary charts, it is based on the nature of activity, which I have already told you. Number 2, body weight. Number 3rd is height of that player. Number 4th is the weather condition, the climatic condition, the fitness of the player, whether he or she came from some disease or anything.
having. So these are the main points we have to consider whenever we have to prepare the territory chart of the particular person. Football players means it's a heavy sports. The nature of sport is heavy sports. Having skill, then strength is there, endurance is there. So these are the some physical fitness components which are required for this football game. Thank you, sir. Sir, good evening. Sir, I'm Dr. Sambhu. Hello. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. Sir, Yes. can you suggest some rehabilitation exercise for strain, sir? For strength. Strain. Sorry. Strain, sir. Sports injuries, sir. Okay. Strain. Strain. Okay. Strain. Strain is our muscular energy related with the muscles. So how you have to strengthen our muscles after getting injury means in a rehabilitation process, when your strain is normalized, then you'll use some exercise which strengthen your muscles, that is isotonic exercise. You can use some isokinetic exercise in a very simple way. So isotonic exercise is one of the main best exercise for the strain after the cure of this strain. During, if you are having a strain, you can use this cryokinetic also. You will put this ice on that particular muscles and do some exercise in a normal manner. So it's help in the rehabilitation process. The healing time is reduced by this also. Thank you, sir. So thank you, all of you. But मैं कहूँगा, Any question? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आज वैसे मुझे को मजा नहीं आया. मुझे मजा इसलिए नहीं आया कि मेरा कैमरा आज काम नहीं करता. अगर कैमरा काम करता तो each and everything I'll explain on my board also. Sir, बहुत अच्छी Now a conclusion in the session. Any question, friends? No. Okay, sir. Okay. Now a conclusion part. First of all, thank you very much, Dr. श्याम नारायण सिंह सर. आपने अपना वैल्यूएबल कीमती समय यूजीसी एचआरडीसी फर्स्ट रिफ्रेशर कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन में आपने हमारे सभी प्रतिभागी के बीच में आपने अपने व्यूज शेयर किए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. आपने अपने वक्तव्य में आज बहुत ही शुभ दिन, वर्ल्ड फिजियोथेरापी के दिन, आपने ये इंजरीज के ऊपर आपने ये लेक्चर लिया और हम सभी पार्टिसिपेंट को लाभान्वित किया है, जिसमें मुख्य क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, स्प्रेन, स्ट्रेन, और साथ में आपने हिमा दास जी का जो एग्जाम्पल दिया उनकी इंजरीज के बारे में, वो बहुत ही हमें फायदा करेगा. साथ में आपने नी इंजरीज, एसीएल और पीसीएल के बारे में बताया, और साथ में आपने आनंद मोहन जी जो मुंबई में उनका कार्टिलेज स्पेशलिस्ट है उसके बारे में बताया. थैंक यू वेरी मच सर. साथ में खिलाड़ियों के लिए ईजा सजा ना बन जाए, इसके अंतर्गत आपने शूज और सॉक्स के बारे में बताया. एक छोटी छोटी बात है जो हम सभी पार्टिसिपेंट को बताया. मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हूँ. साथ में आपने एक गांव का एक एग्जाम्पल दिया, वो गाय और भैंस हम जब धोते हैं वो एग्जाम्पल दिया, और जो वो इंजरीज वहां पर बताई. थैंक यू वेरी मच सर. और आपने आपके स्पीच में एक
चिंता जताई है, वो आपका एक इमोशनल वे दिखाता है। आप कहते हैं कि सर डिग्री वाले टीचर्स तो बहुत है लेकिन स्किलफुल और नॉलेजेबल कम है, तो वो भी आप एक चिंता जताते हैं हमारे शारीरिक शिक्षा के प्रति। आपने यह भी कहा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स इंडिया में बहुत कम है और जो भी है हम उसमें से ही चला लेते हैं सर। आपने एंड फाइनली आप इच्छा के लिए रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया और एंड में हिमांशु जी, सुंदर सर, प्रेम सर और महालक्ष्मी जी ने जो भी क्वेश्चन किए उसका आपने साइंटिफिकली उत्तर दिया है। फाइनली यह सेशन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। थैंक यू सर। भारत माता की Thank you, जय। sir. Thank you, sir. भारत माता की जय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Jai सर। sir. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Our Thank you, Navneet bhai. next resource person has already joined us. Thank you, sir. Thank you.